के आसपास हैं ये लोग और पुर्तल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है। जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं। फिर कट किया वहां पर शॉट फील्ड किया गया और रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति 55 एक विकेट नुकसान पर। और जनाब हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौज तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और 55 रन बने हैं एक विकेट नुकसान पर। 8 ओवर खेले जा चुके हैं। 12 ओवर रन बनाने 178 और बहुत मुश्किल 168 रन बनाने हैं। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, ऊपर गेंद थी और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर माला के बल्ले से निकला। शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे माला यहाँ पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है। विद द टर्न खेलना वो बड़ा शॉट, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज भी है इतनी बड़ी है नहीं। ये शानदार शॉट था, गेंद को आगे डाला था, स्लॉट में गेंद थी, क्योंकि दाहिने हाथ के बैटर के विरुद्ध थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो वो पिक करना आसान, वो एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार वो अब सिंगल मिलेगा आवेश फील्डर शॉट थर्ड पे। पर नेपाल जानती है कि कुछ अच्छे ओवर्स यहाँ पे चाहिए, कुछ बड़े ओवर्स आपको चाहिए। लक्ष्य 203 का पिछले अब 3 या 4 ओवर वो भारत के लिए पक्ष में रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे। इस बार वो अब स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा फंस से गए थे, क्रैम्प हो गए थे। अच्छी वापसी की साई किशोर ने वहां पर। पहली गेंद पे बाउंड्री स्ट्रोक जरूर आया था वहां पर, मगर 2 डॉट बॉल्स डालकर फिर प्रेशर दोबारा वहां पर नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर। काफी रन बनाने 152 रन और बनाने हैं इसको मैच में जीतने के लिए। माला खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और उत्तर खेल रहे हैं। एक बार फिर उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग पर। खिलाड़ी मौजूद है, ही रन जरूर मिलेगा वहां पर। तिलक राज वर्मा थे वहां पर और आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन नहीं कर पाए। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर अभी भी वो शायद उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके जाने जाते हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था तिलक राज वर्मा ने। नेपाल 62 एक विकेट। अच्छी वापसी की वहां पर साई किशोर ने इस ओवर में। और ये कैच वहां पर आवेश खान ने पकड़ा है और बहुत बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ भारत को। 62 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर बाबा साहब विकेट हानो कटाओ, विकेट हानो, विकेट हानो। 62 रन 8 ओभर 2 विकेट। गेम भइरहेछ गाइज। सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु। 48,000 छौँ, सब्सक्राइब गरिदिनु। लाइक आएन गाइज, लाइक भएन। खेलाडीलाई गाली गर्नु भन्दा सब्सक्राइब गरौँ गाइज, होइन? खेलाडीलाई गाली नगरौँ। खेलाडीहरूलाई खेल्न गाह्रो भइरहेछ त्यो अवस्थामा। सबजना 48,000 छौँ, सबैजनालाई भिडियोलाई लाइक गरौँ है। लाइक गरौँ। लाइकै पुगेन, लाइक पुऱ्याउनु पऱ्यो, लाइक टन्नै पुऱ्याउनु पऱ्यो है। सब्सक्राइब पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो। 44,000 छौँ गाइज। सर सब्सक्राइब हान्दिनु सबैजनालाई। सर सब्सक्राइब ठोकिदियो त, सब्सक्राइब ठोकिदिनु सबजना। गुड लक नेपाल, गुड लक नेपाल गाउनु पऱ्यो। गुड लक नेपाल। किस तरह से गेंदबाजी करी थी वहां पर। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे वहां पर, मगर शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आवेश खान मौजूद थे। बढ़िया डाइव लगा के उन्होंने कैच पकड़ा और ये भारत को मिलने वाली दूसरी सफलता। यहाँ तेज गेंदबाज हैं पर बहुत अच्छा एफर्ट वहां पे आवेश खान का। एक बड़ी विकेट मिलती हुई एक सेट बैटर वापस जाता हुआ पुर्तल के रूप में। साई किशोर अच्छी गेंदबाजी या परिणाम जो सफलता उनको मिली है। भारतीय समर्थक का, भारतीय फैंस काफी खुश। बॉर्डर आए हैं जो कप्तान है अब नेपाल के। उनके पास वो एक्सपीरियंस है, एक स्लिप लेना, थोड़ा दबाव में इस समय नेपाल की टीम।
अच्छा एफर्ट, बहुत बढ़िया एफर्ट, अच्छा ओवर 62 पे 2। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और एक और सफलता वहां मिली थी भारत को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वशिंगटन सुंदर को लाया गया है और देखना है कि वशिंगटन सुंदर किस तरह की गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर है, अच्छे ऑलराउंडर है। ट्राई किया उसे ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर बल्लेबाज के ऐसा समय होगा 2 रन जरूर वहां पर अर्जित होंगे। माला के साथ अब कप्तान रोहित पुलेल साथ देने आए हैं उनका। 10वां ओवर चल रहा है, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सारा दारोमदार माला के ऊपर आ गया, उनको तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और रन बनाने होंगे और पूरा साथ देना होगा कप्तान रोहित को, जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये शायद ऑफ स्पिनर के विरुद्ध माला जब स्ट्राइक पे इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब गेंद बाहर की तरफ टर्न कर रहा होगा। इस बार बड़ा शॉट और इस बार पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, यानी कि 6 रन और। अब इनमें वो क्षमता है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये अच्छा शॉट था क्योंकि स्पिन के विरुद्ध खेला हुआ शॉट था। देखिए कैसे अब वो लेंथ को परख लिया था, बैट फ्लो गजब का, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। शुरू से जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला तो उनको मालूम था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं माला। हालांकि इनिंग में 7 चौके और 4 छक्के आए हैं। 70 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन सिंह। आज भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेडल तालिका में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत की 400 मीटर रिले में फाइनल में प्रवेश किया, वुमेन्स की 800 मीटर में भी फाइनल में प्रवेश किया वहां पर। तो भारतीय एथलीट्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एशियन गेम्स में। तो फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी किनारा लगा गेंद का ही फाइनल की तरफ फील्ड किया वहां पर। साहिब किशोर ने 1 रन जरूर मिला, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं माला, जानते हैं कि अब भूरसल आउट हो चुके हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मॉडल अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास। 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, फाइनल सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट। एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय भी अब 4थे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डीप पे तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्ड से। और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए। अभी ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सपोर्ट गाइस, सबैजनाले लाइभमा जो हुनुभएको छ सबैजनाले कमेन्ट गरौँ ल, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ। गाइज लाइक पुगेन, गाइज लाइक हान्नु पर्यो है, सब्स्क्राइब गरौँ गाइज। यो भुर्तेरले बल खाएर के भन्छन् कमेन्टमा, यार के बुझिँदैन हो को हो फेरि यो डिजिटल के लेख्ने होला। 150 गाह्रो छ र 150 कमेन्ट गर्छ, अझै बढी गर्छ। हर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।
स्टार्ट जनाब। हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। गाइस यहाँ गाइसहरुको फोन आउन थालिसक्यो गाइस। सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु है, सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई। The athletes area, isn't it? Bangladesh I saw down there. Cambodia there a little bit earlier because I saw Yirkis. Hello. Very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a work out? कति गाडीको चाहिँ अर्को फोन आएको आइछ यार गाइस। I know you're curious. ल Us. Cambodia out of the competition but find themselves here watching, which is great. हजुर At first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? Eve at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up in the middle table, I see India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or there. China miles in front. They've had a very good games, of course. Next over. Please, it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes, he didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. And I think Podell will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Marla's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India won't mind that as the run rate is filled. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately though, you can see the lengths that India are trying to find against Marla now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Ball. It's, like you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it? In any shape or form. Cover करके देख ले. Single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you, 4 overs? They're not looking to look at you, they just want to hit it out of the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Malla will have to go. Well, this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally. But that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that mid-on initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support.
So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground to as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Mala. 29 off 22, but he has to go. The new batter for Nepal, number 45. Yeah. He's absolutely fine. Dipandla. Great work that was. That's what T20 is all about. It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but kind of where it originated. Airy to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6 against Mongolia? His first delivery went out the ground, and against the Maldives, his first delivery went out the ground. That's an excellent start. He tried his very best. Yeah, first ball. He did. And with that 52, also importantly 50 off 9 record. It's Mongolia, poor Mongolia got absolutely battered. Learned a lot, but they got battered. And he's given, and Nepal are starting to implode here. चार विकेट गयो गाइज. गुड लक नेपाल हान्नु पर्यो छ. गुड लक नेपाल. 11 भइरहेको छ गाइज. 11 ओभर 77 रन, 4 विकेट. गाह्रो पर्ला जस्तो छ गाइज. गाह्रो पर्ला जस्तो छ नेपाललाई. गाह्रो पर्ला जस्तो छ. किप सपोर्ट गाइज. सबैजनाले सपोर्ट गरौँ गाइज. हामी 50,000 जना छौँ. 50,000 जना सब्सक्राइब गरौँ. बट्टा सब्सक्राइब ठोकौँ गाइज. सब्सक्राइब ठोकौँ गाइज. सब्सक्राइब ठोकौँ. हामीलाई सबैजना एसियोमा 1-1 रुपियाँ हालिरहनु भएको छ गाइजहरूले. एसियोमा 1-1 रुपियाँ हाल्नेहरूको पनि नाम लिन्छु म ल. स्पेसल छ. अब 51 रुपियाँ हाल्नु सनराइज ब्याङ्कबाट हाल्नु भएको छ एकजनाले. अनि उमा सरुले 1 रुपियाँ हाल्नु भएको छ गाइज. सो सबैजना Two new batters, that's exactly what India would have wanted. Dubey, the new man, into the attack, just medium pace. It's an edge, but it will go all the way. Wow. Boundary 6 for Nepal. Second ball went for 6. He comes out swinging, does Airy. He tried off his first ball, didn't middle it. He tries off his second, doesn't middle this, but there's enough on it to go over fine leg for 6. They're breathing. Nepal are breathing, but only just. A new strip for this match. It's taken spin, but it's not moved sideways like the beginning of this competition it was. There's a green covering. It looks as though they might go there for the afternoon game. That's been used already, so we might see a little bit more there. There's so many games. It's the women's tournament, of course, and the men's.
It's not a big boundary either side, so you've got not much wiggle room. We'll just take the single. We haven't really seen a lot, have we, of the other Nepalese batters? We've seen Jar, the left-hander, who hasn't walked in yet. But the top order have done all the work for them in their opening 2 games. So we don't really know what the tail has to offer. Through for a quick single. Easy enough. And they'll take a buzzer as well, an overthrow. Bishnoi, the fielder here at cover, comes swooping in, but they were home. I don't think he needed to throw it. Running the first one very quickly indeed. Still a ball to go, 10 off it. It's over already. Dubé, not no second on the T20 Internationals. He is going at around 10. Yeah, just a gentle medium pacer, no real speed about him. So you'll have to have some other skills, some cutters, off cutters, leg cutters, slower balls. By this stage of the innings, out with the white ball, its swing is almost negligible. It's got a top edge. No. They're calling this leg bias. They're just calling on the trainer. He'll just have to do something. गाइज कल धेरै आयो है, कल नगरौँ है, सबैजना कल आएको है छ, कल नगरौँ ल। किप सपोर्ट गाइज, सबैजनाले सब्स्क्राइब गरौँ, च्यानल सब्स्क्राइब गरौँ, किप सपोर्ट गरौँ सबैजनाले है। हामी 44,000 जनासम्म सबैजनाले सपोर्ट गरौँ, सबैजनाले है। गेम भइरहेको छ गाइज। फोन आएको आएछ गाइज, फोन धेरै नगरौँ, सबैजनालाई आग्रह गर्छु म। Stadium end. The 12 overs concluded. 88 runs for Nepal. 4 batters out. He will look to wind up, I'm sure, again. Reverse. Big appeal from the keeper, nothing doing. With a bit of support from the bowler, who obviously thought that was not going to hit the stumps. Going down leg. Just over. To hurry through for the single. And they're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Shore, as the bowler, goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. Sure, the coach will have something to say about that. He goes behind his own wickets this time. I think India they're okay with just letting
singles go by. Ordinarily they'd be a bit tighter in there at backward point trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Doing well. To run hard this time. Ooh, that would have been interesting. When you say HD, hustling and bustling, but hustle and bustling is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, you know, even a single sees the rate required go up because you need more than a runner ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over. The thing is, they need more than one now. They need a couple of boundaries and over. Still hold of that one. And it'll go all the way for 6. A great shot from Shoaib. Shoaib will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's overpitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find... Guys, keep support guys. सबैजनाले गेम सपोर्ट गर्नु पर्यो है. 99/4. 13 ओभर सकिसकेको छ गाइस. 13 ओभर सकिसकेको छ. 13 ओभरमा 99 रन आएको छ. गाइस किप सपोर्ट गर्नु पर्यो. सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पर्यो है. सबैजनाको सपोर्ट आउनु पर्यो. सबैजनाको सपोर्ट आउनु पर्यो. Airy. He's a tiny man as well, so let's be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. If he can do that again, they're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. How far does this top edge go? It is amazing. I mean, Shivam Dubey is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubey is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. I think it just about missed her. Yeah, right back there you go. I hope she heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubey will be rattled. Still 3 balls a bit to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot because Dubey this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6. At his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Quite comfortably. Can they keep this momentum? You'll almost be happy he went for a review just to interrupt that momentum.
conversations. 观众朋友们，我就坐到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球。同时， has come all the way 看好自己的孩 from 子， the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at take extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save them. And they just about saved the boundary. Good work in the deep again from India. This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubey won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. It's going to run out, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 sixes. Guys, keep supporting. 14 ओभरमा 120 रन गाइस, बाँकी छ 6 ओभर यार, 200 क्रस गर्नु पर्यो 6 ओभरमा गाइस। सबैजनाले सपोर्ट गरौँ गाइस। फोन नगरौँ गाइस, फोन गरेर कहाँ हुन्छ, यो स्टिल आइडी पो हो त, फोन गर्ने हो त, स्टिल खल्ती आइडी हो, फोन नगरौँ ल। धेरैजनाको फोन आएको आइछ, सो फोन धेरै नगरौँ। अनि हामी गेम भट्टाबाट गेम हेरौँ, किप सपोर्ट गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ। 50,000 जना लाइभमा छौँ, सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरौँ है, सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, सपोर्ट गरौँ है। और फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पे। और शानदार ओवर रहा था पिछला, जिसमें डेहरी ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट पे 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें, हैरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और ये अच्छा मुकाबला निकले गया, गेंद के साथ अच्छा कार्य किया। फील्ड में याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था, और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था, वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं, और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच, टीम में बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके गाइस, फोन आते आयो, फोन देरी नगरौँ है गाइस, फोन देरी नगरौँ है, फोन आते आयो यार। तुझ पे ईमान हमारा, तुझ पे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझ पे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? वो तेरी टैंकें चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी का महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। काफी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए, हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। डोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत भी चौथे मेडल्स की बात करें चौथे मैदान पे, और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी।
भारत कोशिश रहेगी भारत की कि एक क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और अच्छी गेंद मिशन कर रहे हैं वहां पर, तो सफलताएं अभी भी नेपाल काफी दूर है 70 रन और बनाने इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। धोनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगा बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए हैं, वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम के उनके तो एक और उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर रहा है। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि इन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। प्रयास कर रही है नेपाल, और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो बहुत दूर की जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में इस बार वो कट करने का प्रयास, चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है ये अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है। हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और अच्छी बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमकते बना भारतीय गेंदबाजों को कहीं ना कहीं बताना होगा, क्योंकि 12 रन से ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। क्या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है, और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे। वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है। एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, अब नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते हैं खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है, और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भोतुले, सीधे बैट से फील्डर डी पे तैनात और सीधा हाथ में, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहाँ पे। केंट से पानी होता है। गाइज हामी 50-51 जना छौँ, सबैजनाले सब्सक्राइब गरौँ है, सबैजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ, सपोर्ट गरौँ, किप सपोर्ट गाइज सबैजनाले। लाइभ कस्तो हेर्छ र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ कमेन्ट पनि गरौँ ल, सबैजनाले कमेन्ट गरौँ। गुड लक नेपाल आउनु पर्यो त्यहाँ गाइज, गुड लक नेपाल आउनु पर्यो। अनि गेम भइरहेको छ, बाइ।
No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो। और कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट चारू प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक कराने वाला और गेंद सील चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। छठा विकेट गिरा वहां पर नेपाल का। कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा चलते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी है बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी वहां पर, बारी किनारे गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर इस ओवर में, 2 छक्के कराए। आप भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मेडल टैली जो कल तक थी, आज एक मेडल और ऐड हुआ है। आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने जा रही है। करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा जलते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा खाता खोला था। कहते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति की। 伊沃尔边界6分。 और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है, और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फौग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट चारू प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी हमारे नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पे। कार्य मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया। वहां पर बल्लेबाज गेंदबाजों को सही लाइनर पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है अच्छी जरूर है, मगर नामुमकिन, क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना 19 रन आए और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और ये बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार आगे खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और बाउंड्रीज आती रहेंगी ना तो ये नहीं कि अब नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे। अगर 18 रन के औसत से रन बनाए हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि बड़ी डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद थोड़ा सा देख रहे हैं वाइट का क्या होना चाहिए। ऊंचाई काफी थी, फायर कर रहे हैं। गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है। जीते भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीतकर या हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। पर थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब करने का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में। तभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती है तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा।
उस पर ध्यान केंद्रित, थोड़ा फील्ड बदलाव। जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ, ये थर्ड पे था। ये बैट बाउंस विकेट की आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी निकली वहां से विकेट की आगे से और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन वहां पर मिलते हुए और एक बार फिर थोड़ा सा लक्ष्य कम होता हुआ 47 रन बना रहे हैं बची हुई 19 गेंदों पर। 156 6 विकेट नुकसान पर 12 एक्स्ट्रा साथ दिए हैं। गेंद को उछाल दिया है, देखते हैं कि वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच वहां पर साई किशोर के द्वारा, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर और भारत को मिली हुई 7वीं सफलता। ओवर की समाप्ति 156 7 विकेट नुकसान पर। कैच 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 तगड़ा कैच गरे यार केटाहरूले। गाइस 7 विकेट गइसकेको छ, 7 विकेट गइसकेको छ अनि 16.5 ओभर, 3 ओभर बाँकी छ। 3 ओभरमा ल्याउनु पर्यो माइ गड 44 45 50 रन शिक्षा गाह्रो छ। गाइस सपोर्ट गरौँ, किप सपोर्ट गाइस, सबैजनाले सपोर्ट गरौँ है, किप सपोर्ट अनि सब्सक्राइब गरौँ सबैजनाले, च्यानल सब्सक्राइब गरौँ सबैजनाले, च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, च्यानल सपोर्ट गरौँ है अनि लाइक गरौँ। लाइक पुगेन गाइस, 53,000 सब्सक्राइब पनि पुगेन। सब्सक्राइबर 53,000 भएको मान्छे सबले सब्सक्राइब ठोकौँ न गाइस, सब्सक्राइब ठोकौँ, सब्सक्राइब रातोपरमा क्लिक गरौँ न सबैजनाले, फास्ट गाइस, सब क्लिक गरिहालौँ फटाफट सब्सक्राइब। हामी गेम हेर्छौँ, एचडी क्वालिटीमा गेम हेरिरहेको छु गाइस, आफू गेम हेरिरहेको छैन तर एउटा गीत देखाइरहेको छु। सो सबैजनाले त्यसको लागि सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गरिदिउँ ल। और अंतिम गेंद पर सफलता मिलती हुई वहां पर अवेश खान को 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। भारत एक बार फिर वापसी करता है, अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर शॉट पे गेंद उछाल कर खेला है वहां पर, फिर सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को और एक 8वां झटका लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। बचपन की डाली पे ख्वाब लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक है। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे और 8 विकेट गिर चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है और अर्शदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता। पिछले ओवर में भी नहीं विकेट मिला था। ऑफसाइड पर रन लिख चुका लिया बल्लेबाजों ने। 157 8 विकेट नुकसान। जी हाँ बिल्कुल, ये भारतीय खेमा वीवीएस लक्ष्मण, सराज भोतुले जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ, उनके जो इनपुट्स हैं काफी फायदेमंद साबित होंगे ये युवा खिलाड़ियों के लिए। थोड़ी समस्या जो नेपाल की है क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गवा दिए, 18वां ओवर चल रहा है अभी। संदीप लामिछने आए हैं नए बल्लेबाज, केसी वहां पे मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका उसका रनआउट का, जी हाँ डायरेक्ट हिट की दरकार थी। बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी।
डायरेक्टेड होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि या बहुत दूर है, बहुत दूर। और थोड़ा सा आदमी को विकेट के पीछे, हालांकि अब नेवर आप फॉलो थ्रू में होते तो आसान रहता, नहीं थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, तरकीब के पास, मगर रनआउट का मौका बना था वो दिया और अच्छी ट्राई किया उसने ऑन साइड पर रमॉन पर फील किया जाएगा। पीछे पर 158 काफी खुश है और नेपाल की खेल में थोड़ी सी अच्छा नहीं, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारतीय टीम फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। पोडियम फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच जीत कर आगे बढ़ना होगा और भारत की लिए काफी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी। क्रिकेट मैन में भी अच्छी गेंद वहां पर, प्रॉब्लम गेंद थी, पीछे डॉट बॉल आती हुई तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि बहुत मुश्किल नजर आता हुआ नेपाल के लिए 158 8 के नुकसान पर 45 रन चाहिए 13 अंक। हमने आईपीएल में देखा था कि आईपीएल में काफी बड़ा स्कोर क्लास के अंतिम 3-4 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, तो उन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज कर सकते हैं? फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिसफील्ड एक और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति 162 8 के नुकसान पर। की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। So the penultimate over, bowled by the front line seamer. English colours, as you say, brought back. The teams tends to bowl the penultimate over in a run chase. They always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for the one. Sure, just watches that one go over the top. Yeah, they're still wagging the tail. Oh, this is another keen strike from a back of a length delivery. I tell you, I'd be very interested to know, as far as the boundary count goes, if Nepal have hit more sixes than India. It must be close. I think that's their 13th, isn't it? Edge and 4. Yeah, 12. Boundary ball, 44. Well, here we go. Here we go now, because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do with these last 3 deliveries to put that 5th bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Keeper stopped that one. Yeah. Don't think he'd be keeping in the next match if he'd let them have gone through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well, obviously this odds stacked against them, but just bear in mind they're going 9.2 and over themselves. That's against India. That's not a bad effort. Great effort.
closer than many thought. The Indians have gone a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. There's a man down there. It'll just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. It was expensive in the first three. He's gone for a few here. This fourth over. Which can not be plain sailing for him. There's a couple of wickets. Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air. Should be taken. And is. He's had some catches to take down on that long on boundary. That. बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. We've got Avinash Bohara. One more over to go. 30 needed. So the ball gets thrown to Shivam Dubey, who has all of 30 to defend. So that's the reason why they bowl the number one bowler, that penultimate over. Just eases the pressure a little bit on the fifth bowler. Everything's got to go out the ground. Three and a miss, and India can start to breathe easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home, who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Good fielding, his own bowling. So, taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming out well in this last one. This is much better. This innings, it started with a bang, is ending with a bit of a whimper. Well, where were these Yorkers? Mind you, you are bowling to the last pair. You know it's in the bag. You relax a little bit, don't you? And that helps. Still trying to find the boundary. One more ball to go. Nepal will depart this competition, but not without a few records and a bit of respect to their name. Finish their innings. Finish their innings.
And that about sums up the attitude they've had all the way through. It's India who progressed to the semi-finals, but Nepal who have impressed, and one of points. He's also very tall, very cool and calm, and of course he will be against, as I said, a bunch of defenders who don't have a very specific role, because Kamraju Kadraka will be there in that right corner. He will also be there in the right lane, and then there is also Kunal Bhoy in the right cover.